बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ तालिबात और दीगर सामीन गिरामी, आज की इस वर्कशॉप में मैं आपको दिली खुशामदीद कहता हूँ। बॉडी लैंग्वेज पे ये वर्कशॉप इंतहाई अहम है। बॉडी लैंग्वेज वो चाबी है जिससे आप अपनी आम गुफ्तगू, मीटिंग्स के अंदर गुफ्तगू, प्रेजेंटेशंस या पब्लिक स्पीकिंग, यानी जब आप लोगों के एक ग्रुप से खिताब कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको इंतहाई मुअस्सर बना सकती है। बॉडी लैंग्वेज आपकी सुपर पावर है। कैसे? ये इस वर्कशॉप में हम तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम बॉडी लैंग्वेज पे बात शुरू करें, ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एज ए होल हम देखें कि उस प्रोसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने कंपोनेंट होते हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, जो अल्फाज आप बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज शामिल है। इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन का तीसरा हिस्सा एक्टिव लिसनिंग। अगर इस पूरे प्रोसेस को, जो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, अगर मैं डिवाइड करूं 50-50 में, तो कम्युनिकेशन का 50% वर्बल और नॉन वर्बल कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। और आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि जिसको हम कम्युनिकेशन नहीं समझते, हम तो ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 50% कम्युनिकेशन एक्टिव लिसनिंग पे मुश्तमिल होती है, क्योंकि आम तौर पे इसको तवज्जो नहीं दी जाती कि ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इसलिए एक्टिव लिसनिंग को बाज़ औक़ात मिसिंग हाफ ऑफ द कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। आज हमारा फोकस होगा बॉडी लैंग्वेज पे। वाई इज़ बॉडी लैंग्वेज क्रूशियल? ये क्रूशियल इसलिए है कि जब भी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसमें 7, 38, 55 का रूल कार फरमा होता है। 7, 38, 55 का रूल ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च के नतीजे में सामने आया है। अगर कम्युनिकेशन को लिया जाए, जो वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट है, तो इसमें 7% आपके वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं, 38% आपकी टोन ऑफ वॉइस कम्युनिकेट करती है, और 55% कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल पोर्शन में बॉडी लैंग्वेज कर रही होती है। इसीलिए मैंने आपसे ये अर्ज़ किया है कि बॉडी लैंग्वेज इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, एंड इफ़ यू वांट to make your communication effective, you have to pay attention on the body language and learn what the body language is. तो हम इस वर्कशॉप में ये पूरी तफसील इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं आपसे ये बात भी शेयर करता चलूँ कि इस वर्कशॉप में 13 वीडियो क्लिप्स ऐड किए गए हैं, ताकि मुख्तलिफ नुकात जो बॉडी लैंग्वेज से मुतल्लिक हैं उसकी अच्छी तरह वजाहत हो जाए। ये 13 वीडियो क्लिप्स, ये क्योंकि इंग्लिश में हैं, सब टाइटल्स भी ऐड कर दिए गए हैं ताकि तलबा को और सामीन गिरामी को उसे समझने में मदद मिले। अगर कहीं आपको गुफ्तगू समझ नहीं आ रही, बहुत तेज़ी से बोला जा रहा है, तो आप वहाँ पॉज करके सब टाइटल्स को देख सकते हैं कि ये क्या गुफ्तगू हो रही है, उसको समझ सकते हैं अच्छी तरह। मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि अगर इन वीडियो क्लिप्स के सब टाइटल्स को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज
के जो छुपे हुए राज हैं वो सारे के सारे आप पे अया हो जाएंगे। सबसे पहले हम स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल का एक क्लिप देखते हैं जिसमें एक स्टूडेंट ये वजाहत कर रहा है कि बॉडी लैंग्वेज क्यों क्रूशल है। What makes one an exceptional presenter? Is it flashy visuals? Is it the tone of voice? Is it the actual message or content? Or does it have something to do with body language, our gestures, and our stance? Today, we want to talk to you about this latter point. How do we use our body effectively to communicate our message? Because we have so many great ideas here, but if they remain in our head, don't actually link up with the audience, our message will not have arrived. Our message will not have resonated with the audience. So body language plays a powerful role in how we communicate. And unfortunately, body language can also distract. We've seen this clip before of Michael Bay, right? He speaks, the teleprompter, he loses sight of what's happening, the teleprompter doesn't sync up, and he struggles. And all you see is his body moving around, and he's nervous. He's exuding it. So I want to give some color commentary as we rewatch as a class what is happening. So his stance at the beginning, it's okay, but his hands, he's meshing them. And now he's starting to turn from the audience. Again, his hands are clasped. He's looking a bit down, not at all of you, the audience, and he spins. He shows his back to the audience, and he can't regain composure. He's swaying back and forth. He's looking down. He's avoiding the audience. His nerves are coming out. Again, his hands, he's writing them. And now I think he's looking at the back of the stage. That's the exact opposite place from where you want to actually look. He's incredibly nervous, and now he exits stage. We all want to avoid our own Michael Bay moments when we communicate. The last thing we want at a startup pitch or meeting is to have that happen, is to have the body language take over from the message. If we lose sight of what our body is doing, all people can pay attention to is the body itself, right? It'll take over. आपने ये क्लिप देखा, इसकी समरी में बयान करता हूँ। आपने देखा होगा कि जो शख्स प्रेजेंटेशन दे रहा था वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था, वो अपने हाथों को ऐसे भेंच रहा था और बाज़ औक़ात वो ऑडियंस की तरफ अपनी पीठ कर लेता था, वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आपका मैसेज जो है उसको सुनने की बजाय ऑडियंस आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखना शुरू हो जाती है और जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे होते हैं वो कहीं पीछे रह जाता है और ऑडियंस जो है डिस्ट्रैक्ट होके बॉडी लैंग्वेज की तरफ चले जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये चीज़ें अनइंटेंशनल हो रही होती हैं, हमने कभी इन पे गौर नहीं किया होता, लेकिन आज की वर्कशॉप के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इन पे गौर करेंगे और अगर ऐसी कोई चीज़ मैं या आप कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम आइंदा इसको अवॉइड करें। आइए चलते हैं वर्कशॉप के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सामईन गिरामी, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज के 6 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है आई कांटेक्ट एंड स्माइल। दूसरा कंपोनेंट है पोस्चर, जेस्चर्स एंड पोजीशन। तीसरा कंपोनेंट है पॉजेस एंड नॉड्स। चौथा कंपोनेंट कीप योर बॉडी ओपन। पांचवा कंपोनेंट पावर इन द पाम्स ऑफ योर हैंड। और छठा कंपोनेंट मूविंग अराउंड। ये 6 कंपोनेंट कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, आइए हम देखते हैं। आई कांटेक्ट एंड स्माइल, ये आप अपनी रोज़ाना की गुफ्तगू और मीटिंग्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्चर, जेस्चर एंड पोजीशन, ये आमतौर पे प्रेजेंटेशन के दौरान इनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आपका पोस्चर क्या है, जेस्चर्स कैसे हैं और आप किस जगह पे खड़े हैं। पॉजेस एंड नॉड्स, ये आप आम कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ये मीटिंग्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पे कीप योर बॉडी ओपन, ये आमतौर पे प्रेजेंटेशंस के दौरान या पब्लिक स्पीकिंग के दौरान इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। पावर इन द पाम्स ऑफ योर हैंड,
ये आम कन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, मीटिंग्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। मूविंग अराउंड ये आमतौर पे प्रेजेंटेशंस के दौरान इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं कंपोनेंट नंबर 1 की तरफ, आई कांटेक्ट एंड स्माइल। आपके सामने है इस वक्त एलेक्स लॉयन। ये पीएचडी हैं कम्युनिकेशन में और कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं कि एलेक्स लॉयन आई कांटेक्ट और स्माइल के बारे में क्या कहते हैं। Eye contact. You have to look directly into somebody's eyes that's listening about 99% of the time. You don't want to look too much at your notes. You don't want to look back at your slides, really. You certainly don't want to look at the floor or over their heads. There's a lot of bad habits out there in terms of eye contact. You want to look directly in someone's eyes almost the whole time, and that really takes quite a bit of practice. The other thing you want to do is look directly into somebody's eyes long enough to finish a thought and then move on to the next person. So you don't want to just stare at one person the whole time, and you don't want to scan so that you're never locking in. A communication coach actually once told me, one thought, one look. So long enough to finish about a sentence, feel that connection, and then you move on to the next person. So what do you do with your face while you're making eye contact? You've got to smile. A lot of times people get overly robotic when they present. They might be making good eye contact, but their face is stern and it doesn't look like anything's happening emotionally. You want to smile and warm your face up a little bit so that when you're making eye contact with somebody, they feel a connection with you that's welcoming and supportive. You don't want to come across as a deer in the headlights. जैसे ही आपका आई कांटेक्ट खत्म होता है, लिसनर आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन का सिलसिला टूट जाता है। स्माइल के ऊपर एक और क्लिप देखते हैं। When you smile, you appear to be more likable, more competent. That's what you want, right? Because you want to persuade people. You will also see that your audience will start smiling with you. They will mimic you. Research at the university showed that it's very difficult to frown if you look at somebody who smiles. Smiling is contagious. A smile affects things and it lives around us. And when you and your audience are both smiling, you will both feel good, resulting in a better and more persuasive talk. अब इसमें ये कह रहे हैं कि जब आप स्माइल करते हैं तो स्माइल कंटेजियस है। कंटेजियस कहते हैं मुतद्दी को। आपने सुना होगा एक मुतद्दी बीमारी है, एक से दूसरे को लग गई। आप कभी तजर्बा कीजिएगा कि जब आप किसी को स्माइल करके देखते हैं तो वो आपको त्यूरी डाल के या गुस्से से नहीं देख सकता। थोड़ी देर बाद वो भी स्माइल करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो स्माइल करता है उसके अंदर एंडोर्फिन रिलीज़ होती है और जैसे ही एंडोर्फिन रिलीज़ होती है वो हैप्पी फील करता है, वो कंफर्टेबल फील करता है, वो फ्रेंडली फील करता है। तो स्माइल बहुत अहम है कम्युनिकेशन के दौरान। लाइट स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। यहाँ पे कंपोनेंट 1 बॉडी लैंग्वेज का मुकम्मल हुआ। चलते हैं कंपोनेंट नंबर 2 की तरफ, पोस्चर, जेस्चर एंड पोजीशन। मैं बारी बारी इन तीनों को डिस्कस करूँगा और कुछ वीडियोस भी आपके साथ इनसे रिलेटेड शेयर करूँगा। पोस्चर एंड जेस्चर के ऊपर एलेक्स लॉयन कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं ये क्या कहते हैं। Posture and gestures, and these things go together. So in terms of what not to do for posture, you don't want to shuffle your feet back and forth. You don't want to sway your hips. You don't want to cross and uncross your legs repetitively. You don't want to pace around like a wild person. By the way, if you want to walk in a presentation, it's okay to walk a little bit, but make sure when you walk, you stop and you say a little bit before you walk again. So walk with a purpose, stop, share your message, and then maybe a minute or so later, walk again. Don't pace. So once you have these don'ts out of the way, what should you do? You want to stand with your feet about shoulder width apart. This is how you would stand if you weren't self-conscious about how you're standing. We get self-conscious when we present, but really all you have to do is stand like a normal person. Then you want to put just a tiny bit of weight on the front of your foot and a little tiny bit lighter on your heels, and your whole foot is still touching, but you have a little bit more of a ready, responsive position. You also want to soften your knees a little bit. You don't want to have locked knees. Bad things happen when you lock your knees. I'm not sure of the physiology of it,
But when people lock their knees, they oftentimes pass out when they're nervous, and you don't want to do that in the middle of your presentation. So soften those knees. Now you've got your posture. Let's add some gestures to it. You don't want to put your hands in your pockets. You don't want to put your hands behind your back. You don't want to grab onto different parts of your body for security. All that looks very distracting. So here's what you should do. You should loosely clasp your hands at about belt level, and then you should just gesture naturally from there. You don't want to interlock your fingers, and you don't want to wring your hands because then you'll get too locked in and it's hard to let go. But if you practice at home just loosely clasping your hands like this, then just start to gesture naturally from here. And that's the way to do it. Small little gestures just like this. You can do this all day long, and it's just going to add a nice emphasis to your words, and it's not going to be distracting whatsoever. एलेक्स लॉइन की वीडियो आपने देखी, उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं पॉस्चर और जेस्चर के मुतालिक। अब हम ग्राफिकली देखते हैं पॉस्चर को। पॉस्चर मीन्स कि आप खड़े कैसे होते हैं। हम एग्जांपल्स लेते हैं। पुअर पॉस्चर, ये जिस तरह शख्स खड़ा है, ये खड़े होने का पॉस्चर पुअर है। आप देखें इसकी नीज बेंड है, ये हंच बैक है, इसने सर को आगे झुकाया हुआ है। ये चीज़ें जब आप देखेंगे किसी शख्स के पॉस्चर में, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस की, क्रेडिबिलिटी की कमी नज़र आएगी। नेक्स्ट तस्वीर है गुड पॉस्चर की। ये देखें, इसकी नीज बेंड नहीं है, बैक स्ट्रेट है और ये बिल्कुल सीधा खड़ा है। इस पॉस्चर से स्मार्टनेस, क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस ये शो होता है। तीसरी तस्वीर फिर पुअर पॉस्चर की है। ये पॉस्चर जो है, इसमें आप देखें इसकी वेस्ट है ये आगे गई हुई है, इसका सर भी आगे गया हुआ है। अगर एक आप गट फीलिंग लें, गट फीलिंग कहते हैं कि जिस तरह आप किसी शख्स को देखते हैं ना, आप कहते हैं ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, हालांकि आपने उसके बारे में कोई तहकीकात नहीं की होती, लेकिन आपकी एक जो इंस्टेंट फीलिंग होती है उसको गट फीलिंग कहते हैं। तो अगर आप गौर से इसको देखें तो आपकी गट फीलिंग ये है कि ये स्मार्ट नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये क्रेडिबल शायद नहीं है, तो ये एक फीलिंग सी आती है। जबकि इसमें स्मार्टनेस की, क्रेडिबिलिटी की, कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। लिहाजा बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कन्वे कर रही होती है। हमें इसको देखना है, इसको सीखना है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इस वर्कशॉप को देखने के बाद एकदम बॉडी लैंग्वेज में माहिर हो जाएंगे। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5-6 महीने में आप इसके बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक और तस्वीर ला रहा हूँ। आप देखें कि ये शख्स खड़ा है, इसकी टोज़ हैं ये ऑडियंस की तरफ हैं, टोज़ पॉइंटिंग आउटवर्ड्स ऑडियंस की तरफ। शोल्डर्स विड्थ अपार्ट, आपके पाँव का दरमियानी फासला उतना होना चाहिए जितने आपका शोल्डर्स का फासला है। जब आप इस तरह खड़े होंगे और आपकी बैक स्ट्रेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका पॉस्चर गुड पॉस्चर में शुमार किया जाएगा। यू विल लुक कॉन्फिडेंट, यू विल लुक क्रेडिबल, यू विल लुक स्मार्ट। आगे चलते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ तस्वीर ला रहा हूँ और आपने मुझे अपनी गट फीलिंग्स देनी है। पहली तस्वीर, आप इसको देखें, आप क्या फील कर रहे हैं, गट फीलिंग क्या है कि ये पॉस्चर आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट आप देखें, ये शख्स जिस तरह खड़ा है, क्या आपको जो गट फीलिंग्स आ रही हैं वो कुछ अच्छी आ रही हैं? मेरा नहीं ख्याल। इसको देखें, इसने जेबों में हाथ डाले हुए हैं, ये भी कुछ मुनासिब महसूस नहीं हो रहा। इसको देखें, इसने दोनों हाथ अपने बॉडी के साथ बांधे हुए हैं और एक हाथ से, इस हाथ से अपने बाजू को ज़ोर से पकड़ा हुआ है। ये भी ऐसे लग रहा है जैसे ये कुछ नर्वस है, कुछ छुपा रहा है। ये गट फीलिंग्स हैं जो शायद आएँ, आप में भी आएँ, मेरे में भी कुछ इसी तरह की फीलिंग्स हैं। इस पॉस्चर को देखें, ये बड़ा कैजुअल लग रहा है। जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, कभी इस तरह ना बैठिएगा, वरना आपका अच्छा इम्प्रेशन नहीं आएगा।
याद रखें, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, एक शख्स बगौर आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट कर रहा होता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ बाकी से मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, और अगर आप इसको देखें तो इसने दोनों मुट्ठियां अपनी भींची हुई हैं और ऐसे लग रहा है कि या तो ये सख्त गुस्से में है, या ये सख्त एंजाइटी में है, या हो सकता है कि ये आपको महसूस हो कि अभी ये मुझे एक मुक्का मार देगा। तो ये भी कंफर्टेबल फीलिंग, गट फीलिंग नहीं दे रहा। आगे चलते हुए अब हम आते हैं सिटिंग पॉस्चर पे। सबसे पहले पॉस्चर ए। जब आप इंटरव्यू में बैठें तो आप इस तरह काइंडली ना बैठिएगा, ये बहुत ही कैजुअल लग रहा है। पॉस्चर बी, इसने एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखा हुआ है और दोनों हाथ अपने बांधे हुए हैं। ये भी कुछ नर्वस और कुछ क्लोज्ड लग रहा है, ये कोई कॉन्फिडेंट लुक नहीं दे रहा। अब आए पॉस्चर सी की तरफ। अगर आप इसको देखें, स्ट्रेट बैक है और जिस तरह इसका बैठने का अंदाज है, इसी तरह इनके बैठने का अंदाज, इनको देखने से स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी, वो एकदम गट फीलिंग आती है। बॉडी लैंग्वेज कन्वेज मैनी थिंग्स, सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन आवर बॉडी लैंग्वेज। अब हम आते हैं जेस्चर्स की तरफ। जेस्चर्स की 3 फॉर्म हैं, गिव, शो और चॉप। ये स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल की वीडियो है। इसमें ये स्टूडेंट आपको गिव, शो और पॉज, ये तीनों जेस्चर करके दिखाएंगे ताकि आप इनको अच्छी तरह समझ सकें। I'm going to show you 3 types of gestures: the give, the show, and the chop. Here's an example. This quarter at the GSB, I went to this communications class. It was so great. I mean, you could feel that your skills are improved. I think this was the best class I've ever taken. Let's rewind and see what happened. The give. This quarter at the GSB, I went to this communications class. So this gesture is used to give the audience the facts or the options. Remember to have your palms up, not down. We'll get to that in a minute. The show. I mean, you could feel that your skills are improving. This kind of gesture has the largest variety, and your imagination is the limit. Just remember that the gesture and the message has to match. For example, you can't say profits are rising with a gesture like this. So, congruency and creativity. The chop. I think this was the best class I've ever taken. So, this gesture is used to deliver strong opinion. You can either use it one hand, or you can use both hands. You can use both hands and do a larger chop, which will deliver a stronger message. कंपोनेंट नंबर 2 का लास्ट पार्ट इज़ योर पोजीशन। ख़ासतौर पे जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग में हैं तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। आए स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल की ये वीडियो देखते हैं। It's also important to know where you're standing in the room. A position of strength in this room is somewhere in this center box. As long as you're moving around in the center, you're doing pretty well. Where you don't want to be is off in the corner cowering, or especially in front of any distractions. And this room is pretty good. It doesn't have that many distractions, but there is a window. And outside this window, there are cars, there are buses, there are bikers. And when I was standing over there, probably about half of you could see in your peripheral vision outside the window. And if a car were to drive by, your instinct, your reaction would be to look out the window, and that would break your concentration and our conversation. And we don't want that either. इस वीडियो क्लिप में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो ऐसी जगह खड़े ना हों जहां आप ऑडियंस को सही तरह नज़र ना आएँ या किसी पोडियम या रोस्ट्रम के पीछे छुप जाएं। इस तरह आपका और ऑडियंस का कांटेक्ट टूट जाएगा, आपका मैसेज नहीं पहुंचेगा।
और ना ही ऐसी जगह खड़े हों, मिसाल के तौर पे खिड़की जहाँ से बाहर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हॉर्न हो रहा है, तो आपकी तरफ तवज्जो देने की बजाय जब भी कोई गाड़ी गुजरेगी ऑडियंस की नज़र ना चाहते हुए भी उसकी तरफ जाएगी और इस दौरान आपका और ऑडियंस का कनेक्शन टूट जाएगा। ये वो टिप्स हैं जिसका आपने ख्याल रखना है जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे, पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, कि आपने अपने लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करना है जहां आप खड़े होकर प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग करें। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं और वो है साइंस ऑफ नर्वसनेस के बारे में। ये देखें, आपको शायद दिलचस्प मालूम हो। You got this. You're preparing. You've done your power poses. You got your blue bottle coffee. Just don't spill it on Mark Benioff, and you're gonna be fine. Hi everyone. I am Brad Hungerman. I am a new product manager here at Salesforce, and I'm just really excited today to be talking to you about some of the different customer features that we've been studying for the last few months. We came up with some really good ideas that I want to share with you. So let me just throw a couple of stats up on the board for you. What's going on here? It's kind of true. I don't have time for this. No, why isn't his meeting here? Why is he so nervous? Guys, I have to go. Well, I can't remember the exact statistics, but the really important thing that I want you to... Where'd everyone go? So I want to ask you, what did Brad do wrong here? He was very nervous, and it really showed. His body language was all off. He was touching his neck and his hair, which signifies nervousness. He was holding a cup in front of him, which puts a physical barrier between him and his audience. And he was just not doing well. आइए देखते हैं some do's and don'ts of posture। जब आप खड़े हों तो झुके मत, पोडियम को टच ना करें या उसको बहुत मजबूती से ना पकड़ें जिससे आपकी नर्वसनेस शो हो। जब आप खड़े हों आपका पोस्चर तो आपकी कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, शोल्डर ड्रॉप नहीं होने चाहिए। आप खड़े हों प्रेजेंटेशन के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो आप अपने सर को टच ना करें, हेयर्स को टच ना करें, बॉडी पार्ट्स को स्क्रैच ना करें। ये देखने वालों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपकी गुफ्तगू से कनेक्शन अपने ऑडियंस के साथ टूट जाएगा। आपके फीट की विड्थ ना तो बहुत आप फैला लें और ना ही बिल्कुल साथ साथ रखें। उनकी कितनी विड्थ होनी चाहिए जितना आपके शोल्डर्स का डिस्टेंस है। ये एक नेचुरल पोस्चर जो कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी और स्मार्टनेस शो करता है, वो खुद ब खुद बन जाता है। एक और चीज़ जो बहुत अहम है कि जिस जगह आपने प्रेजेंटेशन देनी है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आप कुछ देर पहले देख लें कि वो जगह कैसी है, उसका सेटअप क्या है, मुझे कहाँ पे खड़ा होना चाहिए जहाँ मैं अपने ऑडियंस के साथ अच्छी तरह कनेक्ट कर सकूं और उनको नज़र आऊं। सही जगह पे खड़े होना और ऑडियंस को फेस करना। आपने अपनी पुश्त ऑडियंस की तरफ नहीं करनी कभी भी, वगरना आपका और ऑडियंस का कनेक्शन टूट जाएगा। आइए देखते हैं बैड जेस्चर्स की कुछ एग्जांपल्स। जेस्चर्स कहते हैं हैंड की मूवमेंट को। जब आप बातें करते हैं तो आपके हाथ की जो मूवमेंट है उसको जेस्चर्स कहा जाता है। ये जो जेस्चर है, आप इसको अगर देखें तो आपकी गट फीलिंग्स, ये शायद मेरी तो ये है कि ये एक अच्छा जेस्चर नहीं है, वेलकमिंग नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आप देखें कि ये फिंगर पॉइंट कर रहे हैं। फिंगर पॉइंटिंग जो है वो अच्छा जेस्चर नहीं समझा जाता, दूसरे इससे अनईजी फील करते हैं। इस जेस्चर को देखें, ये बिल्कुल एक बेबसी की तस्वीर बनी हुई है और ऐसे कन्वे कर रही हैं जैसे इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये भी कोई अच्छी फीलिंग देखने वाले को कन्वे नहीं करता। इस जेस्चर को देखें, इन्होंने अपने मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है, ये भी कुछ अच्छी फीलिंग देखने वाले को कन्वे नहीं करता। ये जेस्चर भी कुछ अच्छी गट फीलिंग कन्वे नहीं कर रहा। और ये तो बिल्कुल बेचारे ऐसे लगता है कि बेबसी का एक तस्वीर बने हुए हैं और जो देखने वाला है वो कुछ अच्छा फील देख के इनको नहीं करेगा, ना इनकरेज होगा, ना इनकी बात को गौर से सुनेगा और ना कोई बात अगर ये कहेंगे तो वो उसको तस्लीम करने पे तैयार होगा। वी कंटिन्यू विद दी बैड जेस्चर्स। आप इस जेस्चर को देखें, ये भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं देता देखने में।
अगेन दिस इज कन्वेइंग ए वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग. इस जेस्चर को देखें. कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में, मीटिंग्स में या प्रेजेंटेशन में ऐसे जेस्चर्स से परहेज करें. अगेन डोनाल्ड ट्रंप फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, ये अपनी बॉडी को स्क्रैच कर रहे हैं, ये भी अच्छा जेस्चर नहीं है. और ये देखें कि इन्होंने हाथ अपना मोड़ा हुआ है और एक हाथ अपने बाजू पे रखा हुआ है, और जिस तरह की शक्ल इन्होंने बनाई हुई है, इस तरह कोई प्रेजेंटेशन में अगर बनाए या मीटिंग में अगर बनाए तो ये अच्छा जेस्चर शुमार नहीं होगा. लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, उसकी बात को गौर से नहीं सुनेंगे. ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात हम अनइंटेंशनली कुछ ऐसे जेस्चर्स कर रहे होते हैं जो कि मुनासिब नहीं होते. इस वर्कशॉप के बाद आप और मैं हम रिव्यू करेंगे अपने आप को और कोशिश करेंगे कि ऐसे जेस्चर्स जो कि एक बैड फीलिंग कन्वे करते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान या मीटिंग के दौरान या पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, उस पे हम काबू पाएँ और उसको ख़त्म कर दें. यहाँ पे मुकम्मल हुआ कंपोनेंट नंबर 2 ऑफ बॉडी लैंग्वेज. अब हम आते हैं पॉजेज एंड नॉट्स की तरफ. सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ब्रायन ट्रेसी की ये वीडियो. ये यूनाइटेड स्टेट्स में कम्युनिकेशन कोच हैं और कॉरपोरेट ट्रेनर हैं. देखें कि ये पॉजेज और नोट्स के बारे में क्या चीज़ें हमसे शेयर करना चाहते हैं. Now, in speaking, the drama and power of the speech is contained in the silences that you create as you move from point to point. And this is an art that you can learn with practice. Many speakers are nervous when they stand up in front of an audience. As a result, they speak faster, with a higher pitch to their voice, and without pausing. When you are more relaxed, you speak slower, you pause regularly, and you have a deeper and more authoritative tone of voice as either a man or a woman. Now, there's nothing as attention-grabbing as a pause. When you pause, you bring people up short. They mentally trip and fall into the silence that you have created. They immediately give you back their full attention. Each time you pause, go silent, smile, you get them to recenter themselves on you and what you are saying. For instance, the dramatic pause is used to make a particular point stick in the minds of your audience. You can use a dramatic pause immediately before delivering an important point, and you can use a dramatic pause immediately afterwards to allow people to absorb the importance of what you just said. Key number 1 is this, and you start, and at the end you stop. Key number 2 is this, and then you start and describe it, and then you stop. And at the end you just stop and allow people to absorb. Another pause you can use is called the sentence completion pause. This should be illegal because it's so powerful. And this is where you make a statement or quote a line that everyone has heard before and knows the words. When you give the first half of the line, or even 9/10 of the line, the audience mentally leans forward to complete the sentence with you. This causes them to engage more closely with you and to listen with greater attentiveness to what you're saying. Now, whenever you use this technique, you must discipline yourself to stop and wait until the audience speaks up and completes the sentence. You then repeat the words to finish the thought. You'll have the total attention of the audience. They don't necessarily speak aloud, but they finish the sentence in your mind. आइए एक और वीडियो देखते हैं पॉजेज और नोट्स पे, और फिर मैं इसको समराइज करूंगा. So what are some ways that you can use pausing? The first and one of the most important ways is to pause before you open. When you walk up on stage or when you get in front of a group of people, it's very important both for your nerves as a presenter and for the audience to take a long pause. I'd say give it 2 or 3 seconds. Scan the room. Let yourself feel comfortable. Absorb what's happening with the audience. And also give the audience the time to stop shuffling paperwork and actually pay attention to what you're doing. This long dramatic pause will allow you to do that. The second factor is to use pauses for dramatic effect.
If you have a really profound thought, if you have a really excellent point, it's great to give that long pause afterwards. That allows the audience to digest what you're saying to them. It gives them time to think about how they feel about what you just said. It gives them time to have an emotional reaction to what you've just said. Another point is if you ask a question, you must pause. If you ask a question and you just run right through and you're talking a million miles per hour and you don't give the audience time to think about what you're actually saying, they are not going to follow what you're actually saying. So if you ask a question, especially if you open with a question, give the audience a couple seconds to actually think about what you're saying. Give them time to think about how that relates to their life or what they think about the material. Another factor is to pause instead of using fillers. A lot of times we get nervous when we're speaking. So what do? We try to completely smash out all that space, that void, that silence. The best thing you can do to prevent from using filler words and distracting things that take away from your message is to use a pause. Give yourself a second to think about what you're going to say next. As I just stated earlier, this pause is going to be dramatic. It's going to draw your audience in. It's actually a good thing to do. So take your time. It's not a race. You're not in a hurry. The audience isn't going anywhere. They want to hear what you have to say. So give them the time to hear it properly and use those pauses instead of filler words. मैं इसको समराइज करता हूँ. पॉजेज आपकी प्रेजेंटेशन को, पब्लिक स्पीकिंग को 4 चांद लगा सकते हैं. एक तेज़ स्पीड में, मोनोटोनस स्पीड में बोलते जाना पब्लिक को भी बोर कर देता है और वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती है. मुनासिब पॉजेज बहुत ज़रूरी हैं. ये ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट रखते हैं. और एक और चीज़ जो सेकंड वीडियो में इन्होंने यूज़ की है कि फिलर वर्ड्स को यूज़ ना करें. फिलर वर्ड्स क्या हैं? फिलर वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हम आम तौर पे अपने तकिया कलाम के तौर पे अपनी आम गुफ्तगू में बोलते हैं. मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ. मैं तो इसको बहुत बोलता था. इसी तरह कुछ लोग कहते हैं मेरा मतलब ये है, और कुछ थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं मेरा मतलब ये है. ये हैं वो फिलर वर्ड्स. ये किस तरह अवॉइड हो सकते हैं? आप अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड करें, कोई प्रेजेंटेशन है देने से पहले, और उसको सुनें. उसको जब आप सुनेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये लफ्ज़ आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी को कम कर रहा है. तो इस तरह आप अपने फिलर वर्ड्स पे आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कहता एकदम आप काबू पा लेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक कर लेंगे. तो ये है फिलर वर्ड्स, जिनके बारे में सेकंड वीडियो में बताया. यहाँ पे कंपोनेंट नंबर 3 ख़त्म हुआ. अब हम कंपोनेंट नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं. कीप बॉडी ओपन टू ऑडियंस. आपके सामने इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम धनंजय है. ये वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग रहे हैं. ये इस कंपोनेंट की एक ही वीडियो है, कीप बॉडी ओपन. आइए देखते हैं कि धनंजय इसके बारे में क्या कहते हैं. When you get nervous, you try to cover your vital organs. And that's why you would see a lot of speakers sometimes fold their hands, bring their hands in front of them, and that's a sign of nervousness. Great speakers keep their body open, so there is no barrier between you and me. आइए देखते हैं some don'ts while presenting. वो चीज़ें जो आपने प्रेजेंटेशन देते हुए या पब्लिक स्पीकिंग करते हुए अवॉइड करनी है. आपने अपने कोट को पकड़ नहीं लेना किसी हिस्से को भी, या आपने दौरान गुफ्तगू या प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी आस्तीनों को चढ़ाना नहीं शुरू कर देना, या अपने बटनों के साथ खेलना शुरू नहीं कर देना, या बाज़ औक़ात हाथ में बॉल पेन पकड़ा होता है, अनइंटेंशनली आप उसको टिक 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 कर रहे होते हैं. ये काम नहीं करना. पुट हैंड्स इन पॉकेट्स. पॉकेट में हाथ नहीं होने चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं. आर्म्स को क्रॉस नहीं करना ऐसे. ये भी साइन ऑफ नर्वसनेस है और एक बैरियर है आपके और ऑडियंस के दरमियान. आपने अपनी हाथों को अपनी पुश्त पे नहीं बांध लेना. आपने हाथों को अपनी कमर पे नहीं रख लेना.
आपने ग्रैब और इंटरलॉक हैंड्स नहीं करने। अपने हाथों को आपने अगर ऐसे पकड़ा हुआ है ज़ोर से या इंटरलॉक किया हुआ है, ये भी साइंस ऑफ नर्वसनेस हैं। बजाय इसके कि लोग आपकी बात सुने, वो आपकी इस हरकत को या इस जेस्चर को देखना शुरू हो जाएंगे और आपका और उनका कनेक्शन टूट जाएगा। कीप और होल्ड फिजिकल बैरियर। आपके सामने या आपके और ऑडियंस के दरमियान कोई फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए जिससे वो आपको सही तरह देख ना सके। या अगर आप पोडियम पे खड़े हैं तो आपने पोडियम को इतने ज़ोर से नहीं पकड़ लेना कि वो साइन ऑफ नर्वसनेस को शो करे। इससे क्या होगा, ऑडियंस आपकी बात सुनने की बजाय जिस तरह आपने उसको ज़ोर से पकड़ा होगा वो उसको देखना शुरू हो जाएंगे। आपका और ऑडियंस का कनेक्शन टूट जाएगा। यहाँ पे चौथा कंपोनेंट ख़त्म हुआ। अब हम पांचवें कंपोनेंट बॉडी लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, पावर इन द पाम्स ऑफ योर हैंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले धनंजया को सुनते हैं कि वो पावर इन द पाम्स ऑफ हैंड के बारे में क्या कहते हैं। Have your palms open. Do this exercise with me. Take a look at your palms. Turn them around. Take a look at the inside of your palms again. What side relaxes your eye? If you really concentrate, when you look at the inside of your palm, your eye relaxes. And a lot of great speakers, they open their palms towards the audience, showing a more openness. And that allows the audience to connect with the speaker better, as opposed to showing the back of your hand. आपने ये गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग आइंदा अपनी प्रेजेंटेशन में या पब्लिक स्पीकिंग में या मीटिंग्स में इसको अपने जहन में रखेंगे। आगे चलते हैं। आपके सामने एक बड़े मशहूर कम्युनिकेशन कोच हैं, इनका नाम एलन पीस है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं। इन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में पावर इन द पाम्स ऑफ योर हैंड, या हमें पाम्स को अप रखना चाहिए, अपने हाथ की पुश्त को ऑडियंस के सामने नहीं रखना चाहिए बल्कि पाम्स को ऑडियंस को शो करवाना चाहिए। इसको बड़े ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किया है। देखें ये क्या कह रहे हैं। इनकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा स्पीड में है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि सब टाइटल्स आपको शायद इसको पॉज करके देखने पड़ें ताकि आपको ये गुफ्तगू पूरी तरह समझ आ जाए। अगर ये गुफ्तगू पूरी तरह समझ नहीं आएगी तो जो ये राज बता रहे हैं, जो पाम्स अप में बॉडी लैंग्वेज के अंदर होता है, वो पूरी तरह समझ नहीं आएगा। आइए देखते हैं। Now there are more connections between your brain and the palm of your hands than any other body part. Did you know this? More connections between the brain and the palm of the hands, including men, ladies, than any other body part. So clearly the palms have evolved as a very important part of human beings, and they are. They make your bed, they brush your hair, they do small artwork, they do handshakes, they play the piano. In fact, they do more things than most other body parts. But here's my question to you. When you're dealing with people where you want to persuade them, convince them, get them on side, you want to get them to say yes to whatever you're proposing, whether it's that job or that date, or just to get your idea and accept it, where are your palms as you're talking? Now, this is something that most people have never considered. Never. You know, after the session, you'll consider it, you'll think about it, and later today, you'll start to realise things about why people respond to you in the way they do that you've never thought about. Here's what I'm going to do. I'm going to say the same thing 3 times. I'm going to change. I only want to deal with the palms of my hands. Now, I keep my body fairly still, so I don't use any other body signals to infiltrate this. And I'll keep my voice as close to the same as I can. I say as close as I can because we know that when you change your body language, it's hardwired in your brain to change the way you sound. So I'll try to keep it as close as I can sound-wise. And I'll use exactly the same words, same instruction 3 times. Now, your task is to decide, do you accept what I'm saying? Do you want to do it, or do you reject me? Do you want to fight me, or do you want to go along with it? You want to say yes or no. That's what you've got to do. Okay, we're clear on this? Here we go. First instruction. Now, don't do this, just imagine this is what we're going to do. Now, in a moment, I'm going to ask the people who are sitting in these seats here, I'll invite you to come and sit on the side of the room, please. And I'll invite the people here to take their seats. Now, those in the back of the room, come forward to the front. And those who are in the front can sit anywhere you choose. Now, raise your hand if you feel okay about what I'm asking. People say, okay, raise your hand. And so just about all of you are prepared to do what I want. You don't even know what it is.
But you're prepared to get up and do what I want because you feel like I won't threaten you, I won't intimidate you. Ellen won't make me look silly. This could be a bit of fun. That's what your mind's thinking because I use a signal that appealed to your ancient brain. Let's try the second instruction. Same words, same voice, changing only the palm. Here we go. Now I'm going to ask the people sitting on this side of the room here, I invite you to come and take these seats. And the people there, if you can sit over here, please. Those at the back, come forward, please, and sit here. And those in the front can sit anywhere they like. Give me a word that goes with this. What are you feeling? A word. Okay, who feels like you're getting an order? Raise your hand if you got an order. Okay, think about this. So are you telling me that all I have to do is change my palms from upward position where you wanted to do anything I wanted without question? Now I've turned it over. Now you're saying to yourself, hang on a minute, this guy's giving me an order. Well, maybe I don't want to do that. I'm an independent. I'll just check it all out. Make me laugh, funny guy. So now, how many of you are resisting? Let's try the third approach. Now, I'm going to ask the people sitting in these seats here, if you can come and sit over this side of the room, please, and those seats can sit here. In the back of the room, if you can come forward, please. Sit here. And those in the front can go anywhere you like. Now, give me a word that goes with this, a word. And not a gesture, a word. I guess that was a word. What are you feeling with this? Well, this is more than an order. This is a directive. You have no choice, and you're an idiot. That the palm up speaker had up to 40% more retention of the deal than the palm down speaker. The palm up speaker had the best adjective: laid back, friendly, humorous, engaging. As soon as the palms turned over, authoritative, management, telling me what to do, pushing. When the finger came out, nobody could remember much, and they got the worst adjectives about that person. Now, here's my question for you. What's your prominent position? You have a dominant position of one of these, and which is yours. Most people have never considered, but you've got one that you are using primarily when you're dealing with others. Now, is it up? Is it over? It's a finger. Now, we know the palm down, historically, is a power signal. There's more power, in fact, 4 times more power in your hands facing down and up. Think of famous examples like Adolf Hitler. The Nazis salute when Hail Hitler, and it frightened everybody. How would he have gone if he had gone, Hail Hitler? Nobody's going to follow Hail Hitler. That's scary. That's submission. Now, here's the good news about this, that you can change and modify your hand signals with a little practice. Now, when you first start to do this, what happens if later today or tonight you suddenly discover you're a finger pointer? Like you're talking to a few of your friends that are here and you've forgotten all about it, and you're talking and they're watching, looking at your hand. And there it is, hitting these silly idiots on the head, knocking them into submission. Now, the thing about body language, it's an outward reflection of your emotional condition. All body language shows is how you're feeling. Whatever attitude or emotion you're feeling is likely to be reflected in gesture, movement, or posture. स्पीड कुछ तेज़ थी एलन पीस की, नो इशू. सब टाइटल्स मौजूद हैं, आप उनको पॉज करके पढ़ सकते हैं. अब मैं एक मुख्तसर वीडियो जो बड़े सादा अंदाज में इसी चीज़ को कि पाम्स को अप होना चाहिए और टुवर्ड्स द ऑडियंस होना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करती है स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल की. आइए देखते हैं वो वीडियो. Another subject is about having your palms up. So, I'll give you an example. People on the right, please rise and move to the left. I'll do it slightly different this time. People on the left, right, please rise and move to the left. One more time. People on the right, please rise and move to the left. Do you see the difference? Which one do you think would make more people move? The first one, yes. According to the study, if you have your palms up, 84% of the audience complies. If you have your palms down, 52%. If you have your fingers, 28%. Never use your fingers at your audience. It looks just arrogant, and only politicians use them. डियर स्टूडेंट्स और सामीन गिरामी, यहाँ पे 5वां कंपोनेंट बॉडी लैंग्वेज का ख़त्म हुआ. अब हम छठे कंपोनेंट की तरफ जा रहे हैं और छठा कंपोनेंट है मूविंग अराउंड. एक वीडियो देखें जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. Now you can stand in just one spot for the whole presentation. There's nothing technically wrong with that. A lot of great speakers, presidents of countries do stand in one spot, but there's no reason you have to. Because here's the thing about moving.
when you are speaking and moving, you exude confidence. You come across as more comfortable, more authoritative. And you seem like you just know what you're talking about because you're not standing behind a full speech and a full script. Now, you very well may still be using notes, but if you've created notes the right way, you can just glance at them occasionally and walk around, and it just exudes more comfort, makes you look more relaxed. It also creates variety because when you're walking, you're forcing your audience to move their head. If their head is moving, they're less likely to fall asleep. Now, here's the other thing about walking is anyone can do it. Anyone can walk and talk for the most part. Any 5-year-old can walk and talk. But because most people are too afraid to do it, most people fear public speaking. Therefore, most people are afraid to walk around when they're giving a speech. So when you do it, at the gut level, your audience is thinking, wow, that person's really confident. They must be a professional speaker. All you're doing is walking and talking. The key to walking is you don't want to do something like this. If it's too rhythmic and too consistent, then it seems like I'm pacing, and then it seems like I'm nervous. The key to movement when you're walking around giving a speech is it has to seem purposeful. And it has to seem inconsistent. You can't be going around in circles and you can't be going back and forth like a grandfather clock. You have to be walking around as if you're just thinking, reflecting. Sometimes to make a point, stop, pause. Sometimes for a transition after you've finished a thought, walk a few feet. तो आपने देखा कि मूविंग अराउंड भी बाज़ औक़ात बड़ा हेल्पफुल रहता है और आपकी प्रेजेंटेशन को बड़ा इफ़ेक्टिव बनाता है। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, यहाँ पे वर्कशॉप का इख्तिताम होता है और अब मैं समरी आपके सामने पेश करूँगा। बॉडी लैंग्वेज के 6 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है आई कांटेक्ट एंड स्माइल। आई कांटेक्ट से आप अपने ऑडियंस से कांटेक्ट बनाते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपकी बात को गौर से सुनते हैं। स्माइल एंडोर्फिन रिलीज़ करता है, वो भी स्माइल करते हैं, वो आपको ज़्यादा फ्रेंडली अच्छा समझते हैं। एंडोर्फिन की रिलीज़ से वो आपकी बात मानने के लिए तैयार होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग और फ्रेंडली लगती है। दूसरा कंपोनेंट पॉस्चर। अगर आपका पॉस्चर ठीक है तो आप कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और क्रेडिबल लगेंगे। जेस्चर्स हैंड्स की मूवमेंट को कहते हैं। जेस्चर 3 किस्म के होते हैं, शो, फील एंड चॉप। इसी तरह पोजीशन आपकी ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां आप ऑडियंस को नज़र आए और वो प्रोमिनेंट जगह हो और वहाँ पे कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो। नंबर 3, पॉजेज एंड नॉड्स। ये बहुत ड्रामेटिक होते हैं, ये आपकी प्रेजेंटेशन में बड़ी जान डाल देते हैं। ऑडियंस आपसे कनेक्टेड रहते हैं, वो इंतज़ार में रहते हैं कि अब आप क्या कहने वाले हैं। चौथे नंबर पे कीप योर बॉडी ओपन। आपके और ऑडियंस के दरमियान कोई फिज़िकल बैरियर नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपने एक वीडियो में देखा भी था स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल की। 5वें नंबर पे पावर इन द पाम्स ऑफ योर हैंड। आपकी पाम्स की डोमिनेंट पोजीशन अपवर्ड होनी चाहिए और इसको एलन पीज ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट ने ये बताया था कि अगर आपकी पाम्स अप हैं तो 84% लोग आपसे एग्री करते हैं और अगर आपकी पाम्स की पोजीशन डाउन है तो 52% लोग आपसे एग्री करते हैं और अगर आप फिंगर पॉइंटर हैं तो फिर 28% लोग आपसे एग्री करते हैं, बाकी एग्री नहीं करते। और आखिर में मूविंग अराउंड। मूविंग अराउंड से भी ये है कि ऑडियंस की नज़र आपके साथ साथ चलती है और वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं और एंगेज रहते हैं।
वर्कशॉप को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बॉडी लैंग्वेज इज़ योर सुपर पावर, यूज़ इट इफ़ेक्टिवली। लेकिन साथ मैं ये भी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ इस वर्कशॉप को एक बार देखने से नहीं आएगी, इसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए। आप अपनी रिकॉर्डिंग करके देखें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने प्रेजेंट करें, उनसे फीडबैक लें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप बॉडी लैंग्वेज के इफ़ेक्टिव यूज़ में माहिर हो जाएंगे और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग है, आपकी मीटिंग्स के अंदर गुफ्तगू है या आपकी आम गुफ्तगू है, को बहुत मौसर और बेहतर कर देगी। यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस आखिरी बात के साथ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द की टू द सक्सेस। इफ़ यू वांट to reach the highest tier of your organization, if you want to reach the mountain top, आपको मुसलसल अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते रहना होगा। यही वो कुंजी है जो आपको ज़बरदस्त कामयाबी दिलवा सकती है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, कामयाबी आपका मुक़द्दर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।